Hello everyone, welcome to the session. Today in this session we are going to cover five most important must-solve questions for the topic probability for XAT 2023. Now probability is one of the topics where we have seen a lot of good questions being asked from in the previous years. So I thought of like discussing five important questions from the previous year papers, which will give you an idea what does XAT expect when they are asking questions in the exam. Hope all of your XAT preparations are going great and you have been solving previous year questions because solving previous year questions gives you a window to understand what the actual exam can be. Okay, we can never predict the exact questions for any exam, but solving previous year questions gives us an idea. Okay, this is what the expectations of the exam is from each and every chapter. The concept and syllabus is same for all exams, but the approach will be different. Our strategy will be different. In the upcoming sessions, I'll also discuss about other chapters and the XAT exam overall. So if you're new to the channel, do subscribe to the Aptitude Club YouTube channel. And I'm Sarthak, and I've been teaching since the last 5 years. And this is the first video on the XAT series for 2023. So let's get started. First question. This was a XAT 2011 question, and this is a simple question on independent events. So if I'll have to explain what independent events are, independent events, two events which are like absolutely unrelated, those are called as independent events. For an example, I'll say tossing a coin and rolling a dice. Suppose I'll say this, tossing a coin and rolling a dice. These are like two completely unrelated events. यहाँ पे outcomes तुम्हारा head and tail आएगा, whereas here the outcomes are 1 2 3 4 5 6. So if someone asks what is the probability of getting a head and an even number, getting a head and an even number, because two events are happening simultaneously, what is the probability of getting a head and an even number? So in this kind of a situation, we'll call these two events are independent events, and in that case we will follow rule of multiplication. It is like simple product of individual probabilities. The probability that you'll have a head and also an even number is probability of head into probability of even number. So you can say 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 4. So you can note it down like independent events. बहुत easy चीज है. If A and B are two independent events, A intersection B is probability of A into probability of B. We follow rule of multiplication in case of independent events. Rule of multiplication. And when we write A intersection B, we'll read it in this way. A intersection B means A and B. Okay, in terms of intersection, when you put it into words, it means A and B. So probability of A intersection B is probability of A into probability of B, independent event. So वही चीज यहाँ पे use हुआ है. Just read the question for 30 seconds. You will understand. You can pause the video if you want to read the question also. So basically यहाँ पे दो neighborhood है, and in two neighborhoods, southern neighborhood and northern neighborhood, there are two types of crimes. Each neighborhood में major crime हो रहा है and minor crime हो रहा है, and individual probabilities have been given to you. For an example, I am taking the northern neighborhood. Northern neighborhood में major crime होने का probability, minor crime होने का probability has been given. Similarly, southern neighborhood, if I am taking, probability of major crime and minor crime has been given. Okay. So first, let us note down the numbers. She knows that the scheduling officer probability of major crime and minor crime being committed in the northern neighborhood is 0.418 and 0.612, and similarly in the southern neighborhood, major crime 0.355, minor crime 0.520. Okay, this is given. Then the question is saying, assuming that all crimes occur independent of each other. Most important line in the question. That means each crime happening is an independent event. So a crime occurring in the northern neighborhood and the crime being major crime being in the northern neighborhood and a minor crime in the southern neighborhood, उसका किसी के साथ किसी का relation नहीं है. All events are independent.
then what is the probability that no crime of either type is committed in either neighborhood on a given day? बेसिकली बोल रहे हैं एक डे में क्राइम नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो no crime being committed in a day indicates no crime being committed in the northern neighborhood or southern neighborhood. No major crime, no minor crime in each of the neighborhoods. तो मेजर क्राइम होने का प्रोबेबिलिटी अगर 0.418 है, मेजर क्राइम नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सपोज मेजर क्राइम डैश, मेजर डैश मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 minus 0.418. Probability of something happening and something not happening, if you add them, it should be 1. So probability of a major crime happening अगर 0.418 है, not happening is 1 minus 0.418. Similarly, minor crime not happening is 1 minus 0.612. Similarly, major crime in the southern neighborhood not happening is 1 minus 0.355, and minor crime in the southern neighborhood not happening is 1 minus 0.520. डोंट वरी टू मच अबाउट इनके वैल्यूज क्या क्या है, इतना बड़ा वी कैन यूज कैलकुलेटर्स और लास्ट को सिंपल अप्रोक्सीमेट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. नो नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट. नाउ इफ आई वांट दैट नो क्राइम थ्रू आउट द डे, तो आई वांट ऑल दीज फोर थिंग्स टू हैपन. नो मेजर क्राइम, नो माइनर क्राइम इन द नॉर्दर्न नेबरहुड, नो मेजर क्राइम, नो माइनर क्राइम इन द सदर्न नेबरहुड. तो ऑल फोर इवेंट्स हैज टू हैपन फॉर नो क्राइम इन अ डे, एंड बिकॉज ऑल फोर आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी इन्हें मल्टीप्लाई कर लो. 1 minus 0.418 into 1 minus 0.612 into 1 minus 0.355 into 1 minus 0.520. Just simple multiply them. You will get 0.069. It's a very simple question. Exam it just looks bigger. It just looks bigger, but question wise a very simple question. ठीक है, just simple 4 events को 1 से minus करके multiply कर देना. Very simple. XAT 2011 का पेपर था, एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो यहाँ पे तो क्लियरली लिख दिया फिर भी, बट समटाइम्स व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस विल हैव टू मेक सेंस. ओके, वेदर इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट और मे बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड ऑल. तो वो कंक्लूड करके देन विल डिसाइड आवर वे फॉरवर्ड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन. होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. Let us come to this one again, a very interesting question on application. Okay, probability कितना beautifully they have applied this. देखो यहाँ पे there are 4 machines. You can pause the video for a while and read the question. There are 4 machines in a factory, and at exactly 8 p.m. when the mechanic is about to leave the factory, he is informed that 4 machines are not working properly. तो 4 faulty machines है. Sorry, यहाँ पे 2 out of 4 machines are not working properly. ये थोड़ा typing mistake हो गया. 2 out of 4 machines are not working properly. Now the mechanic is in a hurry and decided that he will identify 2 faulty machines before going home and repair them the next morning. तो आज identify कर लेगा, कल आके repair करेगा. Now comes the interesting part that it takes him 20 minutes to walk till the bus stop. The last bus leaves at 8:32. 8:32 p.m. को लास्ट बस है, एंड इट टेक्स हिम 20 मिनट्स टू वॉक. तो वॉक करके फैक्ट्री से बस स्टॉप में 20 मिनट्स. दैट मीन्स इफ ही वांट्स टू कैच द बस, ही नीड्स टू लीव द फैक्ट्री बाय 8:12 p.m. एंड अभी 8 बजे है. तो फ्रॉम 8 p.m. to 8:12 p.m. बेसिकली ही हैज 12 minutes to identify 2 faulty machines. अगर हम रिवर्स ट्रेस करेंगे, his job is to identify 2 faulty machines. अगर 12 मिनट में आइडेंटिफाई कर लिया, then he can reach the bus stop, else उसका बस मिस हो जाएगा. And it takes him 6 minutes to identify whether a machine is defective or not. That means 12 minutes में he can only check 2 machines. Okay, now this is the problem statement. उसके पास 12 मिनट है, एंड 12 मिनट में वो 2 ही मशीन चेक कर सकता है. Okay, that's the standard procedure. It takes him 6 minutes to identify whether a machine is faulty or not. So 12 minutes if he wants to catch the bus at time, मतलब 8:32 में बस अगर है लास्ट बस,
8 बजे, वो अभी 8 बज रहा है, 8:12 तक ही हैज टू लीव और एल्स ही कैन नॉट रीच बाय 8:32। तो बेसिकली 12 मिनट्स में दो फॉल्टी मशीन आइडेंटिफाई करने हैं, बट है तो 4 मशीन। तो इफ ही गोज अहेड एंड चेक्स ऑल 4, देन उसको 24 मिनट्स लगेगा, बट इसके पास 12 मिनट्स है। अंडर सम सर्कमस्टेंस ही कैन स्टिल कैच द बस, वही हमें फिगर आउट करना है। तो वो क्या डिसाइड किया, ही डिसाइड्स टू चेक मशीन्स एट रैंडम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैकेनिक विल बी एबल टू कैच द बस? नाउ थिंक ऑफ द पॉसिबल सिनेरियोस। मैं ऐसा 4 मशीन ले रहा हूँ, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, 4 मशीन है। अगर वो 2 मशीन चेक कर रहा है एंड 2 मशीन्स आर डिफेक्टिव, द फर्स्ट 2 मशीन्स दैट ही चेक्स आर डिफेक्टिव, तो 12 मिनट में 2 मशीन चेक किया, ये डिफेक्टिव है, दैट मीन्स नेक्स्ट 2 मशीन्स आर करेक्ट। तो ही डजंट नीड टू चेक दैट बिकॉज उसके पास ये इंफॉर्मेशन है दैट 2 आर फॉल्टी। अगर 2 फॉल्टी है, दिस इंप्लाइज 2 आर करेक्ट ऑल्सो, दे आर वर्किंग करेक्टली। तो अगर वो पहला 2 मशीन चेक किया एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक हैविंग डिफेक्ट्स, तो द नेक्स्ट 2 आर करेक्ट एंड ही डजंट नीड टू लाइक चेक देम, क्योंकि उसको पता है कि 2 फॉल्टी है एंड मेरे को मिल गए कौन से 2, तो व्हाई विल आई चेक द अदर 2, आई कैन लीव द फैक्ट्री। और मे बी ही इज चेकिंग एंड पहले 2 मशीन जो वो चेक किया वही दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स द रिमेनिंग 2 आर फॉल्टी, उसको फिर चेक क्यों करना है, क्योंकि रिपेयर तो नेक्स्ट डे करना है। तो अंडर दिस सर्कमस्टांस ऑल्सो ही कैन लीव द फैक्ट्री, दैट मीन्स बेसिकली ये वो 12 मिनट में फिगर आउट कर लिया वो। बट नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे फर्स्ट मशीन इज डिफेक्टिव और द सेकंड मशीन इज करेक्ट। नाउ ही कैन नॉट लीव द फैक्ट्री बिकॉज उसको और एक मशीन चेक करना पड़ेगा टू नो दैट ओके विच 2 आर डिफेक्टिव। तो यहाँ पे he will not be able to leave the factory, and vice versa also, pehla machine correct, second machine defective, in that case also he cannot leave, he has to check at least 3 machines. So by that logic, if he wants to leave the factory, okay, the condition is either the first 2 machines that he checks, first 2 machines are correct, या तो पहला 2 मशीन करेक्ट होगा और द फर्स्ट 2 मशीन्स आर फॉल्टी। यही लॉजिक फिगर आउट करना है बस क्वेश्चन में। अगर ये समझ गए तो तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ दिस सुपरवाइजर एंड देन थिंक, अगर पहला 2 मशीन करेक्ट है तो बाकी 2 फॉल्टी है, तो वी कैन लीव, और पहला 2 मशीन फॉल्टी है तो बाकी 2 करेक्ट है, फिर उसे चेक क्यों करना है। बट एक करेक्ट एक फॉल्टी हो गया, फिर मुझे और एक चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हाउ विल आई नो? तो इन दैट केस आई कैन नॉट लीव द फैक्ट्री। So these are the only 2 circumstances under which you can leave the factory. बस अभी probability निकालना है। So the probability that he will leave the factory on time or he will be able to catch the last bus. इस पहला केस इवेलुएट करते हैं। This is the first case, case 1. This is the second case, case 2. So case 1 is first 2 machines are defective. The probability that the first machine that he checks is defective is 2/4 because total 4 में से 2 machines are faulty. एंड एक फॉल्टी उसका आइडेंटिफाई हो गया है, सो देर आर 3 मशीन्स लेफ्ट एंड उसमें से अभी एक फॉल्टी है। दिस प्लस अगेन प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 मशीन्स 2 मशीन्स आर करेक्ट इज 2/4 एंड एक बार एक करेक्ट मशीन आइडेंटिफाई हो गया, रिमेनिंग 3 में से 1 इज करेक्ट एंड आई एम एडिंग दीज 2 केसेस बिकॉज ये एक और आ रहा है। व्हेनेवर यू सॉल्व पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, जब केसेस आएंगे तो इट इज दिस केस or this case. When in a question there is a sense of or, you add, and when there is a sense of and, you multiply. Previous question में देखें and आ रहा था तब multiply कर रहे थे, जब sense of or आएगा it is either case 1 or case 2, so that is when we can add. तो बस ये दोनों को भी add कर देना है। 1/2 into 1/3, 1/6 plus 1/6 is 2/6 or 1/3. Calculation wise it's not difficult, it's a very simple question calculation wise, बट लॉजिक इसका बहुत अच्छा है, इसको सोचना है वैसे, बिकॉज ब्यूटिफुली दे हैव अप्लाइड प्रोबेबिलिटी इनटू अ रियल लाइफ सिचुएशन। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन ब्यूटिफुल क्वेश्चन, अच्छा लॉजिक में। इन अ थ्रो ऑफ 13 अनबायस्ड डाइस, अनबायस्ड मतलब व्हेन आई एम थ्रोइंग द डाइस all outcomes are equally likely, मतलब देयर इज नो बायसनेस फॉर एनी पर्टिकुलर आउटकम। मान लो बार बार 6 आ रहा है या बार बार 2 आ रहा है, तो दैट्स अ बायस्ड डाइस।
But unbiased matlab because every outcome has equal chances of coming, so there is no biasness in that. Suppose I'm tossing a coin, head or tail, equally likely. Head आने के chances जितने हैं, tail आने के भी chances उतने हैं, so they are equally likely. So that is called as unbiased. So I'm throwing a dice 13 times, 13 unbiased dice. The most probable sum of the numbers that show on the upper surface of the dice. Now, very interesting. Now, we might not have thought about this. मान लो मैं 2 dice ले रहा हूँ. Okay, for an example, I'm taking 2 dice. So what are the possible sum? The possible sum मेरा 2 हो सकता है and that can come in one. एक ही way में आ सकता है. One way. The next possible sum 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and then 12. 6 possible ways, these are the possible sums. अब देखते हैं कितने वेज में आ सकता है. जैसे 2 ईच डाइस में 1 1 आएगा. 3 के लिए आई कैन हैव फर्स्ट डाइस में 1, सेकंड में 2 और 2 1. So this is 2 ways. 4 is 1 3 or let us say 2 2 or 3 1. So I can get 4 in 3 ways. 5 similarly 1 4, 2 3, then 3 2 and then 4 1. 5 I can get in 4 ways. 6 is 1 5 and then 2 4, then 3 3, then 4 2 and then 5 1. So 6 I can get in 5 ways. 7 is 1 6, then 2 5, then 3 4, then 4 3, then 5 2 and then 6 1. 6 I can get in 7 I will get in 6 ways. Now अभी बहुत लोगों को लगेगा 8 I will get in 7 ways, but it's not that case. 8 तुम 1 7 नहीं लिख सकते, there is no 7. So 8 I'll write it as 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2. Now it will start reducing. 8 I will get in 5 ways. 9 आ जाएगा 3 6, 4 5, 5 4 and 6 3. 9 I will get in 4 ways. 10 I will get as 4 6, 5 5 and 6 4. 10 I will get it in 3 ways. 11 is 5 6 or 6 5. 11 I will get it in 2 ways. And then 12 is 6 6, only one way. So gradually it started increasing and then it started decreasing. Now when let us ask the question in this way, that if we are rolling 2 dice, what is the most probable sum? ऐसा कौन सा sum है जो जिसके आने के maximum chances है? Maximum chances हैं 7 के. Sounds like a little weird, but mathematically तुम देखो 7 आने का maximum chances है, क्योंकि 7 can come in the maximum possible ways. बाकी सबके तो कम कम chances है. हालांकि हमें लगता है जब हम थ्रो करते हैं, ऐसे बहुत सारे गेम्स है जहाँ पे 2 डाइस यूज होता है. यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, तो यू वुड हैव नेवर थॉट अबाउट दिस कि 7 का चांस ज्यादा रहता है. बट मैथमेटिकली यू सी गेटिंग द सम एज 7 is more likely as compared to other sums. So when I'm throwing 2 dice, so 7 is the most probable sum. So if I continue this logic, if I'm throwing 2 dice, the most probable sum is equal to 7. And similarly, if I'll throw 12 dice now, like just multiply 6 times. 2 dice में sum is 7, 12 dice में sum is 7 into 6. Same thing will be replicated 6 times, तो हो गया 42. So 2 dice sum is 7, 12 dice sum is 42. A question is asking here for 13 unbiased dice. So if I'm rolling the 13th dice now in the 13th dice, every outcome is equally likely. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Everything is equally likely to be coming when I'm throwing the 13th dice. So 2 dice में sum is 7, 12 dice में sum is 42, 13th dice में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है. So that means after 13 throws, what are my possible sums? मतलब 42 is the maximum probable sum जब 12 dice में और 12 times I have thrown. 12 डाइस एक साथ थ्रो करो या एक डाइस को 12 बार थ्रो करो, जैसे भी. मतलब 2 डाइस को लेके मैक्सिमम सम 7 हो रहा है, तो 12 डाइस को लेंगे तो 42.
एंड 13th डाइस को उसमें जब ऐड करेंगे तो 42 + 1 43, 44, 45, 46, 47 and 48. All these outcomes are equally likely. ये सारे सम्स आने के चांसेस सेम है, बट जब अभी 14 डाइस करेंगे फिर वो 48 हो जाएगा. 48 इज द मैक्सिमम पॉसिबल. समझ रहे हो? पेयर ऑफ 2 में ले रहे हैं बिकॉज 13 ऑड नंबर हो गया, तो जो आफ्टर पेयर्स ऑफ 2 12 डाइस हो गए, तो 13th वन उसमें सारे चांसेस सेम ही है. तो 42 में 1 ऐड करो जो भी प्रोबेबिलिटी है, 42 में 2 ऐड करके 44 आने के भी सेम चांसेस है. नाउ इफ आई लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल सम ऑफ द नंबर्स दैट शो ऑन द अपर सरफेस? तो 45, 46 बोथ आर पॉसिबल. 39 तो चलो आएगा नहीं. So my answer is option 4. It is either 1 or 2. Very interesting question. Okay, I hope all of you understood. 2 डाइस में 7 आने का मैक्सिमम आउटकम्स है, तो उसी को मैं 6 बार रिपीट करूंगा. तो इन 12 डाइस आई विल गेट अ मैक्सिमम ऑफ 42. मैक्सिमम चांसेस है 42 के. जब 13th डाइस आया तो 42 + 3 45 हो सकता है, या 42 + 4 46 भी हो सकता है. ठीक है, 13th डाइस को सिंगल कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑड नंबर में एंड हो रहा है. अगर 14 डाइस बोलता है तो तुम 7 मल्टीप्लाई कर लेते, 49 आ जाता. ठीक है. दिस इज अ XAT 2008 क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. A coin of radius 3 centimeter is randomly dropped on a square floor of square shaped tiles, side 10 centimeter each. So think of this as a tile, and this tile is of 10 centimeter. तो 10 क्रॉस ट्रेन है. इसमें मैं एक कॉइन जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर में ड्रॉप कर रहा हूं. क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल लैंड कंप्लीटली विद इन अ टाइल. तो व्हाट आई डू इज, कॉइन का रेडियस 3 है. थिंक ऑफ द डायग्राम. लेट अस फोकस ऑन द सेंटर ऑफ द कॉइन. ठीक है, so I'll define an area in between the square tile, this area, and I'll say अगर इस एरिया में कॉइन गिरता है तो इट विल लाई इनसाइड द स्क्वायर टाइल कंप्लीटली. कैसे? दिस इज द area where the center of the coin can fall. Center of the coin इस एरिया में हो सकता है for the coin to completely land within a tile. मतलब अगर कॉइन का सेंटर इस एरिया में गिर रहा है तो कॉइन भी टोटल टाइल के अंदर रहेगा. बिकॉज मान लो सेंटर पूरा एक्सट्रीम में ले रहा हूं एंड आई विल टेक दिस साइड एज 3 3, तो ये रेडियस हो गया. थिंक अबाउट दिस. कॉइन यहाँ पे रहा, एनीथिंग बियॉन्ड दिस कॉइन फिर बाहर चला जाएगा. तो दिस इज लाइक अ बाउंड्री. यहाँ पे भी 3 3, तो पूरा अभी ये एज पे. सेम थिंग हियर ऑल्सो 3 3 3 3. दैट मीन्स कॉइन का सेंटर को अगर हम फॉलो करेंगे, कॉइन का सेंटर पूरे जो बड़ा टाइल है तुम्हारा 10 क्रॉस 10, द सेंटर कांट फॉल एवरीवेयर. So there's this limited area. The center can fall only in this area, and this area will be how much? 3 3 minus हो गया. It's a 4 cross 4 area. 16 आ गया, 16 centimeter square. Hence, if I want the coin to completely land within the bigger tile, the center of the coin must land in this small square. So out of the total area, my available area is 16. So 16 total area is 10 into 10, 100. तो प्रोबेबिलिटी 0.16. एरिया का एप्लीकेशन में सॉल्व हो रहा है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट अगेन. क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है, एक बड़ा टाइल है 10 क्रॉस 10, एक कॉइन मैंने रैंडम ड्रॉप किया, तो हो सकता है कॉइन पूरा टाइल के अंदर रहे या सम पोर्शन ऑफ द कॉइन इज आउटसाइड द टाइल.
Question is saying evaluate the probability that total coin will be inside the tile. So if the total coin has to be inside the tile, मैं चेक कर रहा हूँ बाउंड्री मैक्सिमम कैसे कितना तक जा सकते हैं, एज मतलब कॉइन अगर पूरा एज पे है तो उसका सेंटर यहाँ पे आएगा. फ्रॉम दिस साइड इफ यू लुक उसका सेंटर यहाँ पे आएगा, फ्रॉम दिस साइड हियर. तो इट इज गिविंग मी अ 4x4 एरिया. तो कॉइन का सेंटर यही 4x4 एरिया में अगर उसमें आ रहा है तब जाके आई कैन गारंटी दैट कॉइन इज स्टेइंग इनसाइड द टाइल. एनीथिंग बियॉन्ड दिस कॉइन विल डेफिनेटली सम पोर्शन ऑफ द कॉइन विल गो आउटसाइड द टाइल. So probability is available area by total area. Very beautiful logic. देखो calculations कितने छोटे छोटे हैं. Not about calculations. That is an exam. It forces you to think. Very good questions. Very good questions. You can take advantage of your thinking if you are someone who is able to think properly. You are good at applying the concepts. Maybe you are not very fast in solving questions, but you are good at applying concepts. That is the exam for you. You don't have the pressure of time that इतने मिनट में इतने क्वेश्चंस करने हैं and all. It's a low scoring exam relatively, so pressure वैसे भी नहीं है. But if you are someone who can think out of the box, तुम्हारा aptitude is really strong. It's not a mathematics, it's aptitude. How you approach the question, how you think about the question. People often get indulged in the chapters. That permutation combination is not my forte. Probability I have not studied. Is it required to study coordinate geometry at all? Trigonometry मैंने skip कर दिया है. Binomial theorem क्यों पढ़े? Correct. We don't get too many questions from these areas. But that doesn't mean we'll have zero idea about the chapters. Sometimes maybe the questions are just simple mere application based and they are not really testing our intellect or mathematical prowess by asking those questions. There are questions which will create trouble in the exam. They are lengthy and they will feel like very difficult to solve, but not all the time. So having a brief idea about all chapters is extremely crucial if you really want to have the optimal selection of questions in the exam. नहीं तो अगर अपना सिलेक्शन पहले से ही कर लिए यही चैप्टर पढ़ेंगे ये नहीं करेंगे, इट्स अ डेंजरस वे टू अप्रोच द एग्जाम. एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एंड वी डोंट हैव दैट रूम टू एडजस्ट एंड बी फ्लेक्सिबल इन द एग्जाम. ठीक है. Okay, let us see this. The fifth one, this is a XAT 2010 का question. All these are previous XAT questions. The supervisor of a packaging unit of a milk plant is being pressurized to finish the job closer to the distribution. जो लोग वीडियो देख रहे होगे, when the question is displayed, you can just pause for a while and then watch read the question properly. Take your time, 30 seconds, 40 seconds. So सोचो question के बारे में. Maybe try it yourself and then you can see the explanation anyways. ठीक है. So they want that the job should be finished before the time so that it will give the production staff more leeway to cater to the last minute demand. तो वो क्या कर रहे हैं, जो जितना भी तुम्हारा डेडलाइन है इतना प्रोडक्शन करना है तो थोड़ा टाइम के पहले खत्म कर लेते हैं so that लास्ट मिनट में अगर कोई डिमांड आ जाए तो we can like fulfill that. Now this supervisor has the option of running the unit at a normal speed or at 110% of the normal speed, that is fast speed. तो उसके पास चॉइस है, नॉर्मल स्पीड में करे नहीं तो फास्ट स्पीड में भी प्रोड्यूस कर सकता है. फास्ट स्पीड में करेगा तो जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा. बट व्हाट इट डज इज इट प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द पैकेट्स एट फास्ट स्पीड एंड द रेस्ट एट नॉर्मल स्पीड. वो डिसाइड किया दोनों करते हैं. 60% प्रोडक्शन फास्ट स्पीड में कर लिया, 40% नॉर्मल स्पीड में किया. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन अ पैकेट इज प्रोड्यूस्ड एट फास्ट स्पीड इट इज ट्वाइस एज लाइकली टू बी डैमेज्ड एज कंपेयर टू द पैकेट प्रोड्यूस्ड एट नॉर्मल स्पीड. तो नॉर्मल स्पीड में जब प्रोडक्शन होता है थोड़ा बहुत तो डैमेजेस होते हैं, बट अगर इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एट अ फास्ट स्पीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पैकेट बीइंग डैमेज्ड इज ट्वाइस नाउ. तो वो भी रिस्क है. मैं जल्दी तो प्रोडक्शन कर लूंगा बट फिर डैमेज जो होता है वो बढ़ जाएगा. So that is why he has to strike a balance. Now if the probability of a randomly selected packet from the unit being damaged is 0.112, अब प्रोडक्शन हो गया and from all the lot randomly if you're selecting a packet the probability of that being damaged is 0.112, then what is the probability that the packet will not be damaged at normal speed? So let this probability be x. Let the probability of damage at normal speed, probability of damage at normal speed, let it be x. So probability of damage at fast speed, it is equal to 2x because twice as likely. समझ रहे हो?
एंड अभी बस अपना सिंपल सा एक इक्वेशन है कि 2x प्रोबेबिलिटी में आई एम प्रोड्यूसिंग 60% एंड x प्रोबेबिलिटी में आई एम प्रोड्यूसिंग 40% एंड द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज 0.112. बस अभी इसको सॉल्व कर देना है. So this is like 1.2x plus 0.4x is 0.112 or 1.6x is like 0.112. X is coming as 0.07, I think. So what is X? X is the probability of packet being damaged at normal speed. Question क्या पूछ रहा है? Will not be damaged at a normal speed. So probability of no damage at normal speed is 1 minus 0.07 is 0.93. Simple question. Simple question. कैलकुलेशन वाइज देख रहे हो कितना सिंपल हो रहा है सॉल्व करने में. So nothing difficult. 0.93 आएगा. Okay. So these are the 5 questions which I felt are important from a probability point of view. ऐसा नहीं कि यही 5 क्वेश्चन ही करने हैं बाकी नहीं करना है. इफ यू आर रीडिंग प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये 5 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करने हैं एंड इट विल गिव एन इनसाइट ओके हाउ दैट इज आस्किंग क्वेश्चंस. We'll come up with more questions and more topics of discussion in my upcoming videos. Hope you guys understood these questions. Please go through these questions properly once again and reach out if you have any doubts. In the description link I would mention my Telegram group and you can join the Telegram group and you can reach out to me in case you have any doubts in the preparation process. Okay. So that is it for this session. Thank you all. Do like and subscribe to the Aptitude Club channel and hit the like button so that you can get future updates whenever I'm uploading a video related to any exam. I'll be of course uploading more videos. Recent अभी जो exams है उसके ऊपर XAT हो गया और IFT हो गया, NMAT हो गया, SNAP हो गया उसके ऊपर. And future videos will be again related to CAT 2023 preparation. So thank you once again for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends who are also preparing for CAT and other management entrance tests. Thank you all. See you. Bye bye.